मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग ने वेक्टर्स में अभी 3 लेक्चर सिर्फ थ्योरी किया हुआ है। ओके, नाउ ऑल बिफोर यू विल स्टार्ट विथ एनी लेक्चर ऑफ वेक्टर्स फर्दर, बिफोर यू स्टार्ट विथ एनी लेक्चर ऑफ वेक्टर्स फर्दर, एवरी लेक्चर से पहले you have to go through the complete theory done from day 1, lecture 1 to lecture 3. okay, lecture 1 से लेके lecture 3 तक जितना सारा theory किया है वो बार बार आपको देखना है every day before you start with vectors lecture. okay, henceforth जब तक हम लोग का ये पोर्शन, ये चैप्टर खत्म ना हो, तब तक आपको रोज वो थ्योरी देखने हैं एंड देन लास्ट पेज के सारे स्टेटमेंट्स। ओके, एवरी टाइम, हर लेक्चर से पहले आपको वो देख ही लेना है। ओके, दैट विल एंश्योर दैट यू एक्चुअली रिमेंबर द थ्योरी दैट वी हैव डन इन द फर्स्ट लेक्चर। थ्योरी काफी सारा किया है। ओके, एंड इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट यू विल फॉरगेट सम, यू विल probably अपने मन से निकल जाते हैं। okay, all that will happen, so guard against that, and for that you have to repeatedly go through, right? So even before we get started, all will take a pause and go through the first 3 lectures का work, and then only get going with problem. ठीक है? You take a pause and continue. Okay, एक 10 मिनट्स के लिए आपको करना ही है। हाँ, ओके, अच्छा, now everyone, up till now vectors का थोड़ा सा part was a part of 11th standard syllabus and then vectors 12th standard continue. अब क्या है, प्रेजेंट पोर्शन के हिसाब से या प्रेजेंट आपका जीटीबी के हिसाब से vectors completely as a whole has come in the 12th standard. अब उस वजह से थोड़ा तुम लोग का जो नोट्स का फॉर्मेट है थोड़ा इधर उधर हुआ है। So what I've done is to have a continuous flow of problems. मैंने एक अपना नया प्रॉब्लम सेट बना दिया है which I have uploaded along with this lecture. ओके, ग्रुप पे आया हुआ है, राइट? अबाउट 5-6 पेजेस आर देयर एंड आई विल सिंपली फॉलो दैट सीक्वेंस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, तो एक एक करके सारा टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स विल गेट कवर्ड एंड वी मूव अहेड इन द चैप्टर। ठीक है, अच्छा, होमवर्क जो है मैं आपको ब्लू बुक में से एंड जीटीबी में से देता रहूंगा। ओके, every lecture I will give you little by little from both of them, right? So simultaneously homework आपको दोनों कर देना है, right? Okay, let's not waste too much time. Let's get going with our first problem. It says first problem में can you see यहाँ पर लिखा हुआ है understanding of position vectors, unit vector and magnitude of vectors. Okay, इसके ऊपर so that you all are more clear about that the concept, right? That's why I've given you a little subheadings I've given you all time to time. Okay, first problem, it says A is now can I write in brackets A bar? That immediately means that A bar is a position vector of A bar is 2, -1, 5. So what is A bar all? A bar, which is supposed to be the position vector of A. Position vector of A will be 2i bar minus j bar plus 5k bar. अच्छा, आप 2i cap minus j cap plus 5k cap ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, anyway, so this is done. Then what is given to you all is b bar is equal to 2i bar plus j bar plus 4k bar.
Okay, and C bar is given by I bar plus J bar, I bar plus J bar. So find AB bar. AB bar is given by B bar minus A bar, B bar minus A bar. Position vectors. Okay, any vector can be written in terms of position vectors. Okay, it is always position vector of terminal point minus position vector of initial point. So B bar minus A bar, which is 2I bar plus J bar plus 4K bar minus 2I bar minus J bar plus 5K bar. Hence, AB bar will be 2J bar minus K bar. Okay, then find BC bar भी बोला गया है. BC bar is equal to same way position vector of terminal minus position vector of initial, which is I bar plus J bar minus 2I bar plus J bar plus 4K bar. ठीक है, so this will be minus I, J is gone, minus 4K. AB bar and BC bar दोनों वेक्टर्स आ गए. Check whether they are collinear. AB bar and BC bar, are they collinear, Olga? Are they collinear? These vectors are they collinear? When are two vectors collinear? When one of them is a scalar multiple of the other. Mathematical understanding यही है. When one of them is a scalar multiple of the other. Okay, that's your understanding, right? But what is the meaning of collinear vectors? Vectors which are along the same line or parallel to the same line. So two vectors can be like this, they are collinear. Okay, two vectors can be like this, they are parallel, so they are collinear. Two vectors can be like this, they are collinear. Two vectors can be like this, they are collinear. Okay, so I understand that's the meaning of collinear vectors. But at the moment, can I say ye or ye? Can I write any one of them as a scalar number multiplied by this? Any number multiplied by this will have I and K. I don't think that's going to give us this. So what do I write? I write AB bar is not a scalar multiple of BC bar. Okay. Therefore what? Therefore write down AB bar, okay, is not parallel to BC bar, or AB bar is not collinear with BC bar. AB bar is not collinear with BC bar, right? Also find magnitudes of AB bar and BC bar. I think that's fine, that's fair. All of you all know by now magnitude कैसे ढूंढने का है? Root of it will be what? It will be 2 square plus 1 square or minus 1 square. चलेगा, एक ही बात है. Alright, which means root 5. And BC bar का magnitude will be 1 square plus 4 square, that's root 17. I believe that's perfectly alright. Okay, find the magnitudes of हो गया. Okay, so this is first part of question number 1. Correct? लिख लो. Actually, this little section you all can actually look and write also simultaneously. Okay, because it's not anything great that I am talking about. It is what we've already discussed. So जिसका theory part clear है दिमाग में, उसको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए in writing down the solutions yourself also. Okay. Anyway, चलो AB bar and BC bar ready है. Can I now go ahead to the second part? Second part में इन्होंने क्या पूछा है हमसे? यूनिट वेक्टर. अच्छा,
डिवाइड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड, मान लो ना वेक्टर डिवाइड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड along the vector, in the direction of the vector. Okay, that means vector divided by its own magnitude. Parallel to unit vector, parallel to a vector. Parallel to आ गया तो क्या, vector divided by its own magnitude तो करना ही है रे. Okay, सिर्फ parallel to क्या होगा, आपका unit vector can have same direction और आपका unit vector can have reverse direction. Okay, so plus or minus आना चाहिए. Vectors में उल्टा डायरेक्शन इज नेगेटिव साइन, सो प्लस और माइनस आना चाहिए. दैट्स द ओनली डिफरेंस. सो यूनिट वेक्टर अलोंग, चलो यूनिट वेक्टर अलोंग ए बी बार माइनस 2bc बार, चलो ए बी बार माइनस 2bc बार, ए बी बार इज 2j माइनस k माइनस ट्वाइस, bc बार इज माइनस i minus 4k, hence you will get 2i bar plus 2j bar and ये हो जाएगा plus 3k bar, ab bar minus 2bc bar. You want a unit vector along this vector, है ना. so vector मैंने ढूंढ लिया है, magnitude of ab bar minus 2bc bar will be root of 2 square plus 2 square plus 3 square, which should be 4 and 4 8 9 17. So therefore unit vector along, underline the word along AB bar minus 2BC bar is bolo is it be the vector divided by magnitude of the vector, which is 2i bar plus 2j bar plus 3k bar upon root of 17. That's your final unit vector along. Okay, and parallel to AB bar plus AC bar. Parallel to AB bar plus AC bar. अच्छा everyone, AB bar plus AC bar. चलो AC bar ढूंढ लेते हैं पहले फटाफट. AC bar will be C bar minus A bar, which is I plus j minus of 2i minus j plus 5k. So this should be minus I plus 2j and minus 5k. Okay. And therefore AB bar plus AC bar. Chalo, AB bar plus AC bar. Why don't all of you all evaluate that yourselves? Okay, and find out its magnitude as well, and then it is parallel to that. Parallel to मतलब आपका फाइनल आंसर में वेक्टर अपॉन इट्स ओन मैग्नीट्यूड करके प्लस माइनस डाल देना है. सो प्लीज डू दैट प्लस माइनस थिंग आल्सो. So you should get, अच्छा AB bar plus AC bar itself should be minus I plus 4j and minus 6k. Okay, and इसका मैग्नीट्यूड होगा रूट ऑफ 53. जरा चेक कर लो, आपको भी यही आया है कि नहीं. 1 and 16, 17 and 36, 53, root 53. Therefore final unit vector parallel to AB bar plus AC bar. AB bar plus AC bar is plus or minus. Okay, that upon its own magnitude. Okay, plus or minus आएगा minus I plus 4j minus 6k upon root 53.
all plus or minus I bar minus 4j bar plus 6k bar upon root 53. It's the same, by the way, everyone. प्लस और माइनस आप ऐसे सोचो, प्लस लेके क्या मिलेगा, माइनस लेके क्या मिलेगा, और इधर भी प्लस लेके क्या मिलेगा, माइनस, दोनों सेम ही रहेगा. Alright, both of them are one and the same. So unit vectors done. Okay, unit vectors done. चलो, then a vector of magnitude 10 units. अच्छा. Vector of magnitude 10 units. Vector of magnitude 10 units in the direction of something and parallel to the vector AB bar. अच्छा, vector of magnitude 10 units. इसके लिए भी मैंने तुम लोगों को clear cut instructions दे दिया था. Alright. Magnitude 10 units बोला, so that means what to do? First you will have to find out unit vector in that direction. यूनिट वेक्टर एक बड़ा सा वेक्टर होगा, ओके, बड़ा सा वेक्टर हो गया, तो पहले उस बड़े से वेक्टर को अपने को यूनिट बना देना है. ओके, देन दैट यूनिट वेक्टर विल बी मल्टीप्लाइड बाय 10 इन दिस केस. तो यूनिट वेक्टर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वेक्टर आएगा जिसका मैग्नीट्यूड होगा 100% 10 यूनिट्स. नॉट मल्टीप्लाई द गिवन वेक्टर बाय 10 ना. सो गिवन वेक्टर का अपना मैग्नीट्यूड होगा, एंड ये अपना मैग्नीट्यूड को तू 10 से मल्टीप्लाई करेगा तो इट्स गोइंग टू बी गॉन आउट, रॉन्ग. इज दैट वेरी क्लियर? सो गो अहेड, फाइंड दैट आउट. आई थिंक इट इज BC बार इन द डायरेक्शन ऑफ 2BC बार प्लस 5CA बार. चलो, लेट्स फाइंड दैट आउट फर्स्ट. You all will anyways have to find out unit vector and then multiply by 10, and then multiply by 10. So I think अगर मैंने आप लोगों के लिए डायरेक्ट लिखा 2BC बार प्लस 5CA बार, you all know BC बार कैसे ढूंढने का है एंड CA बार कैसे. BC बार तो अपन ऑलरेडी ढूंढ चुके हैं ना, एंड AC बार अगर इधर है तो CA बार will be इसका उल्टा, डायरेक्शन रिवर्स, सेम वेक्टर ही होगा. ओके, सो प्लस 5 टाइम्स इट विल बी I minus 2J plus 5K. ये CA बार हो गया, एंड BC बार is I believe BC is minus I and minus 4K. BC bar. Okay, which means ये वेक्टर है 2BC plus 5CA is, बोलो, it will be minus 2I plus I, 3I. J इधर है ही नहीं, minus 10J. And 25K बार है and minus so 17K bar. Is that okay? So this vector has अपना its own magnitude, है ना, बड़ा सा मैग्नीट्यूड रहेगा. इसका मैग्नीट्यूड क्या है? इसका मैग्नीट्यूड ऑफ 2BC बार प्लस 5CA बार इज रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 17 स्क्वायर. 17 स्क्वायर is 289 and 9 is 298. 398, root of 398 से ठीक है. उसका सिंप्लीफिकेशन मीन्स अगर कुछ और निकल सकते हैं, सो दिस विल बी 19 and 9. 199 मतलब nothing, na? 199 prime. Okay, so root 398 cannot be. Then unit vector we want in the direction of. So unit vector in the direction of will be vector
plus 17k bar upon root of 398. Vector divided by its own magnitude. Therefore, required vector is equal to 10 times the unit vector. So this will be 10 upon root 398 and 3i bar minus 10j bar plus 17k bar. SO. This should be fine. ठीक है? Fine. Then third का B part. Oh, third का B part they wanted parallel to vector AB. Oh, parallel to vector AB. I think vector AB is this only. Parallel to vector AB. 10 units. Vector of magnitude 10 units. Parallel to AB bar. That means along AB bar and along BA bar. Along AB, along BA. ऐसा. So AB bar itself is this. And magnitude of AB bar आपने पहले स्टेप में ढूंढ लिया है √5. So unit vector parallel to AB bar. Unit vector parallel to AB bar. Parallel to AB bar will be plus or minus AB bar upon magnitude of AB bar upon magnitude of AB bar. And this will give us plus or minus 2j minus k bar upon √5. Upon √5. Therefore, required vector will be required vector of magnitude 10 units है, इसलिए plus or minus 10 by √5 and 2j minus k bar. 2j minus k bar ये होना चाहिए फाइन. ठीक है? I believe that should be good enough. Yes. Okay. Question number 4, all of you all, actually is not relevant to the A, B, C given in the main question. Okay. Question number 4 is independent. Find the value of C such that ऐसा है. All of you all, find the value of C. C is a constant. C is a number. It's a scalar. So find the value of C. Find the value of C such that magnitude of C u bar is 3. Magnitude of C u bar is 3. And u bar itself is I plus 2j plus 3k. Achha, everyone, magnitude of C u bar is mod of C magnitude of u bar equal to 3. Mod of C, please understand what I am saying. Alright, I am saying magnitude of C u bar, scalar multiple of a vector, उसका magnitude निकालना है, तो what will you do? It will be mod of C into magnitude of u bar equal to 3. Mod of C, इधर magnitude of C नहीं बोलना है. Okay, it is a number, so it's the modulus value of that number that's asked. Then this is not mod of u bar, it is magnitude of u bar because it's a vector, so you have to read it as magnitude of the vector. Okay. Basically, everyone, remember, note करके आप भी लिख सकते हो. When I say mod magnitude of minus 2 times I bar plus 2k bar, what will you do here? It will be 2 times root of 1 square plus 2 square, है ना? So it will be 2 root 5. So basically इसका तो magnitude लेना ही है आपको और इसका modulus value लेना है because it's the length of the vector you're finding out. So it has to be positive, can't be negative. So इसके absolute value इसका लेना है. Whereas if I say 2 times I bar plus 2k bar, ये तो कोई भी यही करेगा. So both of them are the same. That means if this is 2 root 5, remember when I say magnitude is 2 root 5, it can have two meanings. It can have two possibilities, and that's exactly what is going to come up from here as well.
So याद रखना, magnitude of scalar multiple of a vector will be modulus of the scalar into magnitude of the vector involved. ठीक है? So I understand this will now lead us to modulus value of C. Magnitude of u bar दिया है, magnitude of u bar आ जाएगा root of 1 square plus 2 square plus 3 square is equal to 3. So this is mod C root 14 is equal to 3. So mod C is 3 by root 14. So C is plus or minus 3 by root 14. Plus or minus 3 by root 14 is the final answer. I hope everyone is clear. This is absolutely fine. Okay. जरा फटाफट नोट कर लो.